बंद कर दे, क्लास शुरू हो रही, ठीक है। सो चैप्टर आपने नोट किया होगा जो लास्ट लेक्चर था उसमें 9, 10, 11 ये तीनों चैप्टर्स हमने एक लेक्चर में कवर किए थे, और आइडिया इसलिए यही था कि हमने मेन जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कवर करने थे, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। हाँ, एमसीक्यू तो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं जितना भी बेसिक हो। सो इसका मतलब है कि 9, 10, 11 से एमसीक्यू या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या कोई न्यूमेरिकल भी हो तो वो जस्ट वन लाइनर होगा, ठीक है, डिटेल प्रॉब्लम नहीं होंगी। सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर 15 व्हिच इज ऑसिलेशन, राइट, ऑसिलेशंस। और इसके बाद 16 होगा वेव्स, ट्रेवलिंग वेव्स, सॉरी, ट्रेवलिंग वेव्स। सो बिफोर वी ये बेटा क्लास में नहीं होगी बातें, ठीक है। ये वेव और ऑसिलेशन दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कैन एनीवन रिकॉल कि दोनों में क्या फर्क है? अभी कभी हम वेव कहते हैं, कभी हम ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये जो स्टाइल है ना, अब इसने क्या किया कि एक का डेफिनेशन बता दिया और दूसरे का बस, ठीक है। अच्छा, अगर आप दूसरे का भी डेफिनेशन बताते फिर भी दैट वाज नॉट द आंसर टू माय क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन आई सेड टेल मी द डिफरेंस एंड यू रिपीट द, वो तो बुक में भी दिया हुआ है ना, यू आर जस्ट रिपीटिंग द डेफिनेशन। कॉम्प्रिहेंशन मैं चेक करना चाहता हूं कि डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, and that means that you have to say it in words that are, yeah, that clarify the difference. So repeating the definition and repeating the definition, आप गूगल में सर्च कर लेना, वो डिफरेंस, वो एआई इंजन होता है, वो क्या करता है, वो इधर लिस्ट कर देता है, इधर लिस्ट कर देता है। it only shows how stupid the engine is actually, because listing two things is not a way of distinguishing. You need to distinguish it using precise words, ठीक है। So yes, yeah, no, actually they have a, you're not hitting the line. So the word oscillation is only used when you refer to time, yeah. So you consider, so they are both about periodicity, you know, periodic phenomena, right? So being periodic is a mathematical concept, right? Now if you consider periodicity in time, then you call it oscillation, right? And if you consider it in space, you call it a wave. That's the major distinction. But this is problematic because wave is also, because you know these words are also used by mathematicians. So my goal is to clarify the difference for a physicist, but for a mathematician they use words in a totally different way. So for a mathematician it will not matter whether we are considering something in time or in space. Why? Can you give me an answer? The answer lies in those three words, yeah? Real world, conceptual word, mathematical word. So in the mathematical word, time and space, remember time and space are physical concepts, yeah, and mathematics has no units, right? So time का जो उधर counterpart होगा उसका कोई unit नहीं होगा, और जो space का होगा उधर भी कोई. So for mathematician it doesn't matter because there are no units anyway. So they will use the word wave in only a mathematical sense. समझ आ गई? और उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो मैथ कैलकुलस में आप अभी पढ़ रहे हैं, have you studied the trigonometric functions, cosine and sine, right? So if I plot it, and remember I told you when we are doing math, there are no units, no meaning, no physical meaning, right? So in math when I say I have a line segment, right, or I have a circle, or I have a rectangle, can you tell me what is the unit of this radius? No, कुछ भी नहीं हो सकता, देयर यूनिट है ही नहीं सर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब है कि आप चाहते हैं कि मीटर भी होगा, ये टाइम भी होगा, तो ये तो जो आंसर नहीं है ना। इन मैथ देयर इज नो यूनिट,
Whenever you introduce units, you are outside the math. This is what you need to remember. Why? Because the circle will be a useless object if I attach unit to it. Because then I will have to define an infinite number of types of circles. A circle for length, a circle for time, a circle for current. I don't want to do that. I just want to have one circle and I want to use this everywhere. And that is only possible if I do not attach any unit to it. Line segment, what is the unit? No unit. Don't tell me it's meter or second, centimeter. It's a mathematical object. So इसका जो area है, what is the area? Let's say इसका ये 1 है. So what will be the area? Pi, right? Pi only. No pi meter square, no pi inch square, nothing. Okay? What is the length of this? If I say 3. So length is 3. And I am using the word length in a mathematical sense. That is not the physical length. So whenever you use a word, you have to add physical to it if you want to emphasize. Because you know in physics, length is a physical quantity, right? One of those 7 fundamental quantities, time, length. So when you say physical time, physical length, physical area, you refer to meter squared or centimeter squared. But when you just say length, meter, so and you don't clarify it, it means mathematical, right? So keeping all of this in mind, now I am asking you a question. What you learned in calculus is the sine function and the cosine function, right? So this is the sine function and this is the cosine function. ये क्या हो जाएगा? Sine and this is, I'm not writing sine x or sine t. Why? Actually, I want to write this here, sine, and I want to write cosine. When I'm writing it here, I'll just write the name of the function. But if I want to write it here, then I will follow the coordinates. So if the coordinate here is x, I'll write sine x. The coordinate here is x, it will be. So it means that these two objects have different meaning. Because I have a coordinate, this x is not one point, it's all the points, right? This is all the points. So sine x is not the function, it is the coordinate on the y-axis corresponding to each value of the sine. But the function itself is only sine, yeah? Sine is the function. Here the cosine is the function. One thing is wrong because I need to clarify that it has to go both ways, yeah? So you cannot tell me that it starts from here and there is nothing there. It will not be, so you can only call it sine and cosine if it is periodic. And periodic means it goes both ways. Yeah? If anything starts at a point, it is not periodic. समझ आ गई? मैं remove करता हूँ, it will not be called sine. It will only be called sine if it repeats in the same way both ways and there is no end. The moment you stop it somewhere, it ceases to be a sine. बात समझ आ गई? That is the importance of understanding the definition. When you say sine, sine has only one meaning. Yeah, there is no stopping, no, and it will have to repeat in the same way. ये नहीं कभी यहाँ पे वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी पीरियड ज़्यादा है, कभी कम है. Exactly, ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ना इसका पीरियड चेंज होगा, ना इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. Everything has to stay the same and it has to be both ways. तो दोनों में फर्क क्या हुआ बेसिकली साइन और कोसाइन में? There is only one difference in the two. कि 0 पे उसका फेस क्या है. So ये 0 पे उसका 0 है और ये 0 पे 1 है. That's the only difference. If you remove that, if you ignore that difference, the rest of it is the same. They have the same period, the same amplitude, right? Same frequency, everything. अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है x एक्सिस पे? What will be your name for the quantity on the x axis? No, I'm just asking for the nature. I'm not asking for time is physical. That's the problem, right? If time, let me tell you one thing. If you are using time t for physical time, and then you say
sine t. This is not a sine function anymore. This is not even allowed to write. Do you know that? You can't write this. Why? Because t will have physical units. So when you will be computing it, you will have one value for meter, one value for centimeter, and then you won't be able to compute. So anything you do in math, you make sure that you get rid of the unit before you do any math. ठीक है? अगर आप ये लिख दें कि sine of 3 meters, it's nonsense. ठीक है? You can't do this with any mathematical function. ना ये log के साथ आप कर सकते हैं, ना ये sin के साथ, ना cosine के साथ, कुछ भी, ना ये square के साथ कर सकते हैं. ठीक है? हाँ, अगर आपने square करना है फिर वो कोई और चीज बन जाएगी. So but anyway, so कहने का मतलब ये था कि जितने भी ये आपने mathematical functions पढ़े हैं वहां पे, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं sine wave, और इसको हम क्या कहते हैं? So the wave, the meaning of wave is mathematical. This is not the wave I am asking you. I was asking you, tell me the difference between oscillation and wave. There I meant the difference in physics. So when a mathematician looks at a wave in physics, a traveling wave, and at an oscillation, for him or her, they are just both mathematical waves. So don't bring in mathematical wave to this discussion. समझ आ गई? Mathematics वाले इसको oscillation कहे, wave कहे, उसको पता है कि उसकी कोई मीनिंग नहीं है. तो हम जब when we are to physics, then we are not discussing these functions, right? We're not discussing these functions. We're discussing motions. So if you have, now let's start with the most basic object in motion. अभी तक जो इस कोर्स में हमने पढ़ा है वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन आप कंसिडर करते रहे हैं? Give me the name of the physical object which you have been studying so far for its motion. Particle. Particle. We try to model everything as a, because that is the simplest object we know so far. We don't want to complicate things. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको मॉडल करते हैं particle, and if it is complicated then we have two particles, right? Let me just understand this. Let's say I am trying to, this is very important in this section, because this particle model will not work everywhere. So far we have been using this model successfully. Let me show you. What if I want to model this opening of this door and closing? Opening and closing. Can I use particle model here? No. I will use particle model only if I dismantle this door, and I transport it in my, for example, truck, because then I can imagine a particle representing this whole door and moving. But here it's not doing that. Yeah, I'm just changing relative positions of different parts of the door and then changing it again. So if I want to use the particle model, I will need at least two particles. One particle for this part and one particle for this part. That part is not moving, so that particle will be at rest and this particle will be in a circle. And I'll connect these two particles with an imaginary mathematical line without any thickness, without any detail. समझ आ गई? And now you should understand why you had to study torque, moments, because there you cannot you cannot be happy with just one particle. You need at least two particles. Sometimes you will have to go with three particles, right? So for us so far we are dealing with one particle, and if that one particle, so think of this as one particle, right? And if I study the motion of this particle about one position, and it's actually back and forth. Yeah, the old English for this is to and fro, but to and fro is not used anymore. Yeah, so you just call it back and forth. So back and forth motion of a particle about an equilibrium point. Equilibrium किसको कहेंगे? You studied equilibrium in the previous chapter. What will be the equilibrium? When all the forces are zero, and the net force. When all the forces are not zero, the forces can be zero, but the net force will be zero. So it means that there can be no acceleration, right? It can have motion, uniform velocity, but it cannot have acceleration. So that will be an equilibrium position,
right? And remember, because we allow equilibrium to be in motion, you can allow this marker to be moving in a car and oscillating, right? Look, it's having that back and forth motion about that point, and that point itself is moving at uniform velocity. There is nothing wrong with that, right? That's why we call it equilibrium. Equilibrium may or may not be at rest. So you can have the equilibrium at rest or in uniform motion. In both cases, you have an equilibrium, and there is a particle moving back and forth about that equilibrium. That is what you mean by oscillation. And this has to be considered in time. We don't, okay, space becomes relevant here because you have to track the point. Okay, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो space उसमें आ जाता है, लेकिन आपका जो fundamental focus है वो किस पे है, वो time पे है. So even if it moves, you know it has to come back. Yeah, you know it has to come back. So there are special details, but this whole thing, remember, this is interesting thing now. So if, let's say I have this box, and inside this box there is a particle which actually have this back and forth motion, and this box moves as a whole. So although the box is moving in space, but that motion has no oscillation. That is a motion just like any other particle. So all the interesting details is in the oscillation. Now, when will we have traveling waves? So again, you start with this initial oscillation, right? And imagine a string, right? You have a string, and you hold one end there, and you just make one of the ends oscillate about its mean position. So because all these molecules of the string are connected to each other, that oscillation will not be in isolation. That will transfer the energy to the next particle. So you can imagine a string as if it's a collection of particles connected with each other by bonds. So any physical string can be imagined to be a collection of many particles, just like I had to model this situation with at least two particles. So if I want to study wave phenomena, I cannot go with one particle. I can only use one particle if I am interested in oscillation. But if I want to study this disturbance being propagated in space through some medium, I will need more than one particle, because this particle will have its own oscillation. That oscillation will transfer its energy to the next particle, then to the next, and this transfer requires medium between it. Right? You cannot have the transfer of energy in vacuum. We are not studying electromagnetic waves at this point. Because we are studying mechanical waves, we need some medium, either water or air or vibrating string or whatever you can come up with. So आपको समझ आइए कि wave हम किसको कहते हैं, traveling wave? When that one oscillation is allowed to influence the medium around it, and because that medium has other particles pick that oscillation, and then other particles pick that oscillation, and this energy is now spreading out in space, and it is spreading out in an oscillatory fashion. It is not moving just like this. So for example, initially I was saying that the only interesting thing is here, the object as a whole is moving without any periodic phenomena. But now what you are doing, now everything is oscillating now. Look, so all the particles in space are oscillating. So that periodicity is now in space as well. You cannot say it's just one oscillation and moving, like before. No. Now you have a collection. So now you can simplify all this discussion. What we mean by traveling wave is an infinite collection of oscillators. When you look at all of those oscillators, but they are not isolated, they are connected. If for example, if you have an imaginary world where all these particles are oscillating independently of each other, each having its own source. Let's say you have some demons, 1000 demons, and each one is giving you an oscillation. That will not give you a wave. Why? Because they are not connected. The oscillation, the wave has to start from one point,
and it has to travel through the medium. So the source of a, ये बेटा क्लास में ना करे बात है, the source of a wave must be one particular oscillation. ये बात ज़हन में रहे, ठीक है. In simple cases, what if you have two sources? Let's say one source, ये जो string की मैं बात कर रहा हूँ, let's say आप भी इधर से oscillate करना शुरू करें और उधर से भी करें. So you can now imagine two sources. If I have two particles, I can have two sources as well, right? So this source will have its own traveling wave. This source will have its own traveling wave. The medium is the same. The medium is the same. These two phenomena can interfere, and you can have those interference patterns, standing waves. Yeah, you know all of that. But whether it's a simple traveling wave or whether it's a complicated collection of waves, it will have to start with 1, 2, or 3 oscillations or oscillators, and the rest will be done by the medium. ये बात समझ आ गई? तो अब हम चैप्टर 15 में विल बी स्टडिंग ऑसिलेशन ओनली, which means one particle in periodic motion about an equilibrium point. And in chapter 16, we'll be considering traveling waves which will originate from this oscillator which studied in chapter 15, and we'll see how it moves in space. ये बात समझ आ गई? But in both cases, we will be interested in periodicity. ठीक है? So just motion will never be called a wave if it is not periodic. So let's study some waveforms, because we will use mathematical functions to represent oscillation and wave. We need to understand some functions. अब ये इस function को आप क्या कहेंगे? What will be your name or your type for this function? ये किस type का function है? Give me one name. Of course, you can call it triangular function, yeah. But I can replace this triangular function with the square function, yeah, rectangular function. So what is important here is not this particular shape, but the fact that it is periodic. So you can say it's just a periodic function. This is also a periodic function, right? But they are different. So what will be your name, your distinction? और यहाँ पे इसने शो नहीं किया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे एक बात है जो मैंने बताया ना कि if you have nothing there, maybe it's not a periodic function. What I was referring to is that when I have an excess and I still have nothing there, it means that it is not a periodic function. What if I don't have an excess at all? It means that I did not try to visualize that part. So it is still a periodic wave. Why? Because if there was an excess, this would have been repeated. अक्सर लोग यहाँ पे फिर डॉट लगाते हैं, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई? In this case, I can say it's periodic, but in this case, this will not be periodic. क्योंकि अगर excess है तो then you have to show the plot, ठीक है? So they are both periodic, but this, if you think about this and if you connect it with calculus, this is a smooth periodic function, and this is not very smooth. How do you quantify that smoothness in calculus? Why am I saying that this is smooth and this is not smooth? Smoothness को आप वहाँ पे कैसे quantify करते हैं calculus में? Differentiability, right? It is differentiable as many times as you like. Sine का derivative क्या है? Cosine. Cosine का क्या है? Minus sine. Minus sine का फिर क्या है? So, और आपको the differentiation में you are looking for changes. So if you can differentiate and it never stops, it means that it's the smoothest possible function available in math. इसको आप करें, try to differentiate this. So यहाँ पे the derivative exist करता है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे there is no derivative क्योंकि you cannot have two values. The derivative from the left is positive, the derivative from the right is negative. You cannot have two values for one function. So it's not even differentiable. समझ आ गई बात? And if you have another function, let's say you have this function. So this is smoother than this one. Yeah, because यहाँ पे तो मसला ये है कि इधर derivative 0 है, इधर 0 है, और यहाँ पे क्या है? The derivative is infinite, and here the derivative, it doesn't exist because there are two values. At least they are finite.
here it doesn't even exist as a finite value. तो इसका तो लेफ्ट और राइट भी है ना मसला है, ठीक है. So अब यहाँ पे हमें we are looking for simplicity, just like we were focusing only on the particle model in the previous chapters. We want the simplest possible oscillator. You need to understand this. We need, of all these possible periodic functions, we are looking for the periodic function which is the simplest, and simplicity will come from smoothness. So why we love sine and cosine? Because of all the periodic functions available in math, they are the smoothest of all. So sine and cosine are special in two ways. Number one, they are periodic, right? Because if smoothness was the only criteria, then I have exponential function, right? Exponential को आप जितनी दफा differentiate करें, you can differentiate it, right? Rising exponential and falling exponential. But what is wrong with that for this purpose? Periodic नहीं है. We need two properties, periodicity and smoothness. So as far as these two properties are concerned, sine and cosine are the best available options in math. So इसका मतलब ये है कि any oscillator, now you understand the oscillator, yeah? A particle moving about its equilibrium back and forth in a periodic way. Because periodic can be in this, so you can have an oscillator like this, you can have an oscillator like this, you can have an oscillator like this, an infinite number of possibilities. We are looking for the simplest possible oscillator, right? So that, and then we will have the simplest possible periodic motion, right? Which will be described either by a sine wave or a cosine wave. Or so, and why do I say that they are the same? Because the only difference between them is the initial condition, right? तो वो तो आपको पहले ही पता है. पार्टिकल जब आप स्टडी कर रहे थे चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 में, so you can have that particle with zero initial velocity, yeah, with non-zero initial velocity, with zero initial position, all those different things. So I can have this initial condition, I can have this initial condition, or anything in between. I can have a wave which is neither sine nor cosine, right? Can you imagine? What if I have a wave? Remember, this starts from here, which you call sine, and this one starts from 1, which you call cosine. What if I shift it in such a way, so you can think of this as if it has been shifted, yeah, shifted sine, or you can think of this as if it has been shifted cosine. What if I don't shift it so that sine becomes cosine? What if I shift it somewhere in the middle? फिर क्या हो जाएगा ये? Remember, now this is neither sine nor cosine. It will be cosine plus some phase shift, or sine plus some phase shift, plus or minus. You know, in trigonometry, how do you represent this? Cosine, for example, theta plus pi by 3, for example. If I have pi by 2, maybe I get sine out of cosine, but I don't want to do that. Now, this is neither sine nor cosine, but you can express this as a combination of sine and cosine, right? So we'll use the word simple harmonic motion. Now you understand the meaning of simple harmonic motion. Simple because we look for simplicity, yeah, periodicity and smoothness. Harmonic because we want periodicity, right? And in periodicity, we want the simplest possible periodic motion. So simple harmonic motion is that periodic motion which is described by either a sine or a cosine or any combination of the two. उसको हम क्या कहेंगे? Simple harmonic motion. ठीक है? And if you look at these plots, you have period. You know the meaning of period, yeah? The time during which the waveform actually repeats itself. So if you have this peak, then you have the next peak. If you have this trough, you have the next trough. Yeah? Don't try to use 0 for that purpose. Why? Because this 0 repeats there. But it doesn't mean that it's a period. So you choose a point which, when repeated, does give you
the period. बात समझ आ गई? So what we mean by period is that the whole graph repeats, not just one point. Why can this not be called a period? Because only the value 0 repeats. लेकिन उसके सराउंडिंग वैल्यूज है वो रिपीट नहीं हो रही, उससे पीछे देखें, ये पॉजिटिव है तो वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है? अब देखें ना, ये पॉइंट इधर आ गया तो ये पॉइंट किधर आ गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव पे चला गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे चला गया। तो आप सिर्फ एक पॉइंट के बेस पे आप इसको पीरियोडिक नहीं कह सकते, लेकिन इस बेस पे आप कह सकते हैं, क्योंकि दैट्स अ स्पेशल पॉइंट। आपको पता है कि जब ये रिपीट होगा तो उससे आगे पीछे वाले भी रिपीट होंगे। या सो व्हाट वी मीन बाय पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन in which the whole graph repeats, not just one point. Yeah, the whole graph. And what do you mean by frequency? इसकी understanding clear है, the time to complete one full cycle. So we will sometimes use cycle, sometimes we will use one oscillation, right? One cycle, one oscillation, different languages for the same object. Now read this carefully. The number of cycles per second is called the frequency. Can you tell me the problem in this definition? There's one serious issue with this. I told you in chapter 1 when we were dealing with units, when you make per second part of the language, then this quantity cannot have any units. क्या आपने cycles भी language में डाल दिया और आपने सेकंड भी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लेट्स से आई हैव 10 oscillations in 2 seconds. Tell me. I have 10 oscillations or cycles, I can call it cycles or oscillations, and that is happening in 2. So what will be frequency? No, if I go with this definition, number of cycles, so I'll just have 5. Why? Because per second is part of the language. I cannot repeat that thing. And cycle is also part of the language. 5 cannot be frequency. Frequency, the frequency we know is actually 1 over t, and t has units of time. So frequency must have units of 1 over time, and that's why we use hertz. Yeah. So we need hertz here. So it means that this definition is not acceptable. So how to change it? It's a very common mistake. You will see this in many, many textbooks. But seeing something in many, many textbooks doesn't mean that it cannot be wrong. Yeah? When something is wrong, it is wrong, regardless of how many books actually have it. And the reason I'm saying is that I'm not making up these definitions. I'm following NIST. What? So NIST is the international body which actually dictates these definitions. Another name you will see is ISQ, International System of Quantities. So they have precise definitions, and they do not allow definitions like this, because this definition will remove units from the final answer, and you cannot have that. तो हम क्या कहेंगे? Number of cycles per time. Number of cycles per time. When you say per time, you are not removing the unit. Per time only means that you are dividing by time, and there is nothing wrong with that. So this means that we now, but you still don't understand it. आप कहते हैं कि 1 over t क्यों है? ठीक है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो 10 है ना. So how will you say 10 divided by? So 10 divided by what? समझ आ गई? तो इसके लिए let me introduce one quantity which will make this discussion very clear, right? So let's get to this side now. So we now want to introduce, remember, because you know cosine and sine, right? And when you look at these functions, so even if this is the variable which is derived from time, you got it from time, and what will be your name for this time interval from here to here? That will be
time period, right? So what will be your name for this part of motion? We are studying oscillation, right? Remember, this means that it starts from 0, it moves to one side of the equilibrium, it comes back to the equilibrium, and then it moves to the other side, yeah, this and this, and it comes back to equilibrium. So what will be your name for this part of motion? उसको तो आप पीरियड नहीं कहेंगे ना, पीरियड तो सिर्फ उस इंटरवल के लेंथ का नाम है. That is what you mean by one oscillation. So one oscillation is part of the motion where it completes one cycle, right? So आप इसको one cycle कहें, one oscillation कहें, जो भी कह दे, ठीक है? Remember in chapter, I don't know which chapter was it, where we were studying motion along a circle, right? So उसमें you remember we used this symbol, and did we use this symbol? This was for the phase, right? We were not calling it phase, we were calling it, so for this the name was angular, no, sorry, angular velocity, right? So for this we were using angular velocity, or what was the name for this? Angular displacement, right? Because velocity is the derivative of displacement. So angular velocity must be the derivative of angular. So phi is the symbol we use for the angular displacement. What will be the unit of phi? Tell me possible units of phi. You can have radians, you can have degrees, and you can have revolutions, or in this case we can say cycles. We can even say oscillations. So far we were, so now I am giving you that equation which was the cause of confusion. So I can say 2 pi, and 2 pi means 2 pi radians. So this will be a value of phi, right? A value of 2 pi, a value of phi can be 2 pi, and that 2 pi means 2 pi radians. And now you give me the same quantity in the other two units, just to make sure we are following. So it will be 360 degrees, remember, and to make sure you follow it, let me write it in this way, because it's very difficult to see that circle. It's just like I said 2 pi radians, so I want to say 360 so that you see the unit, right? We will not need this every time, this is only for this purpose. And the next one, 1 revolution, because revolution is a name which you can only use for circular motion. We want to change that name, we want to use it for oscillation, so a better name will be cycle, right? So 1 cycle. So let me repeat, 1 cycle equals 360 degrees, which equals 2 pi radians, and I can even say 2 pi without radians. And this will be, remember, this will be a value of what? Because remember, knowing the, why this is important, let me tell you. Knowing the value is most of the time confusing. So if I say 10 watts, what will be, what name will you use for that? What will be the name of the quantity whose value is 10 watts? Power, yeah, but not always. Why? Let's change this. Let's say I replace 10 watts with 10 joules. So what will you say? Energy. But remember, torque also has Newton meter. अब आपको समझ आएगी कि हमें सिंबल्स क्यों चाहिए लेफ्ट साइड पे, ठीक है? When an electrical calculation, you say I is the current, and you say I equals 2 amperes, right? So 2 amperes alone may be problematic, because maybe this ampere comes from some quantity which is not current at all, which is something else. Yeah, so you need to tell me that I am talking about the current. So remember, 10 watts can be heat flow rate, remember, and power is not used for heat flow rate, I told you. For that you have heating rate is a different quantity. So what I mean by this is that when you say 1 cycle
or 360 degrees or 2 pi radians, you need to tell me the name of that quantity, and that the name of that quantity is angular displacement. That is very important, and that's why I encourage you to use the symbol phi. It is a value of phi. Now we don't want to use displacement in this context. Just like we replaced revolution with cycle, we would like to replace angular displacement with, what will be your name for oscillations, because we don't want, we are not seeing any rotation. Yeah, there is no rotation. So that the name for that will be phase. In the context of oscillation, we'll replace that angular displacement with phase. Remember it. So now we can look at this graph as if we are following time, but we can also look at this, if we remove time, we can replace this with phase. I can say phi there. So if I replace t, listen to this carefully. If I use t here, then I will have units of time here. But if I replace this t with phi, what value will I have here if that is phi? This will be pi, this will be 2 pi, this will be 3 pi by 2, and so on. The same graph looked from different perspectives. Yeah. So, but now let me tell you, so one candidate will be this. If I want to define frequency, I can say phase divided by time, right? So I say delta phi divided by delta t, and because you know calculus, I can now replace this with, and if it is uniform motion, I can even replace this with. So can I call it frequency? You can tell me that, okay, I'll now try to use this formula to that calculation. Can you tell me that if I give you this data, 10 oscillations in 2 seconds, so what will be the value of delta phi for that problem? 10 what? Now I cannot say 10, because if I say 10, that will mean 10 radians. I told you, when you don't write the units, it will be understood as radians. You want to say 10 oscillations, so it will be 10 what? 10 cycles, because if you don't write the cycles, it will be understood as 10 radians, and that is not what you mean. What is delta t? In that problem, 2, yeah? So 2 seconds. Now I'll tell you what is wrong with this definition, right? I divide delta phi by delta t. So on this side, it looks convincing. Why? Because if I divide this by this, I will have 5, and I can say cycle per second, and cycle per second looks like a unit of frequency, right? So I can say, oh, this is an acceptable definition of frequency. But what is wrong with this? We use the same definition for omega as well. So how on earth will you distinguish between omega and f? यही definition तो हमें omega के लिए भी चाहिए. So what I have, no matter how convincing this side looks, right? This is not an acceptable definition for frequency. It is only an acceptable definition for angular velocity. But remember one thing, we need to change names, right? So we replaced angular displacement with phase. So now we need a new name for angular velocity as well, and that is angular frequency. What? So omega will be angular frequency. We don't want angular frequency here. So what will be your name for this frequency? Just frequency. Yeah. When you say frequency, it doesn't mean angular frequency, it means cyclic frequency, the number of cycles per time. So listen to that wording carefully. This quantity is not giving me the number of cycles per time. This is giving me phase per time, rate of change of phase with respect to time.
and because it is phase, that's why the unit has cycle in it. So this is the definition of omega. Why? Because the answer has cycle in it, and cycle is a unit of phase. So it's phase per time. Is this clear? So now if I want to turn this into a new quantity, what is the first thing you need to do? I need to remove the cycle. So it will be just 5 per second. I'm not supposed to write cycle or oscillation or revolution. So it will just be 5 per second. So then tell me, and then it will be the frequency which I am looking for. But how do I change this formula now? Listen carefully. This was phase per time. Because this is phase, this is time. So this will be what per time? We need a new quantity, yeah? We need a quantity which has cycle removed from it. So अब मुझे ये बताएं कि let's start with this, right? Delta phi is 10 cycle, and this is a value of phase change. What? Phase? Tell me what should I do with this so that the cycle is removed and I'm only left with 10. So it means that I have to divide delta phi with cycle, which will be the same as dividing it by 2 pi. Dividing it by 1 cycle is the same as dividing it by, and in both cases I will get 10. But what will be the name of this quantity? Can you suggest a name? I'll first explain the description. This will be phase change per cycle. So you need to make per cycle as part of the language. Or in other words, I can say the number of cycles. This is the number of cycles. And this is so important that this body, NEST, ISQ, SI, they decided to introduce a completely new quantity, and it has a symbol capital N, and N is the number of cycles. So number of cycles for us will be a new quantity. It will be phase change per cycle. You can either call it phase change per cycle, or you can call it the number of cycles or the number of oscillations. So now tell me what can I write here for a definition of F? If omega is the rate of change of phase, F is the rate of change of what? Now you have the definition. Delta what? Rate of change of phase with respect to time is angular frequency, which you were calling angular velocity. Rate of change of what with respect to time should give me frequency. And the only difference between these two is that this will be per cycle. वो cycle मैं remove करना चाहता हूँ. तो हमने क्या किया? डेल्टा फाई को किस पे डिवाइड किया? तो इसमें भी आप डेल्टा फाई को डिवाइड करेंगे उसी 2 पाई पे, तो ये it will become delta n. So now you have the complete definitions. Delta phi divided by delta t will give you angular frequency. Delta n divided by delta t will give you cyclic frequency. And because cyclic is the default, when I say frequency, I will always mean cyclic frequency. So now can you change this language? Now that you understand the whole theory, how should I change this language? What will be retained in this definition? One thing will be retained. This is correct, the number of, because if I replace this with phase change, I'll get back to omega. So number of cycle is required because I want to get rid of the cycle, right? But I have to replace per second with per time. So number of cycles per time. Number of cycles per time. Okay, this is what you need to remember. And now this is now the reason why we can have 1 over t. अब 1 over t को explain कर सकते हैं, ठीक है? So how can this definition give me 1 over t? Can anyone try this? This will never give me 1 over t. Why? इसकी ना मुझे possible values बता दे. Let's say if I want this delta t to be t, what will I have here in that definition? डेल्टा टी की वैल्यू जब मेरे पास 1 पीरियड हो, 1 पीरियड में कितना फेस चेंज हो सकता है?
वन पीरियड की क्या डेफिनेशन है, इसमें वन साइकिल हो ना, इसमें so the value of delta phi corresponding to delta t equals capital T will be one cycle. So one cycle divided by capital T will give you omega. Now come here, डेल्टा टी को अब टी करे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे सिर्फ वन आएगा कि साइकिल आपने रिमूव किया हुआ है. सो दैट इज वाई वन ओवर टी इज एफ, वन ओवर टी इज एफ. अगर आप इस वन के साथ साइकिल लगाएंगे that will not give you small f, that will give you small omega. And this is the thing which is misunderstood by many even senior physicists. They miss the point because they don't read these international standards. ठीक है ना. अब पता है ISO standards होते हैं, अक्सर आप फैक्ट्रीज के बाहर लिखा हुआ ISO certified. So this ISO certification is not just for industries, it is also for education, right? So the international standard requires a clear distinction between these two quantities. Yeah. So you're not supposed to write one revolution or one cycle or one oscillation. Yeah. You're only you have to keep this unitless, and only this will have units. Yeah? So अब मुझे बताएं, ये तो हमने क्लियर कर दिया ना. Now how will you fix this last line? We want a name for 1 per second. So this is correct, yeah? Because this is per time and 1 is 1 because we don't want to write the cycle. So अब ये हमें ठीक करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? 1 per second. ठीक है? And that is what we mean by 1 hertz. ठीक है? और अगर इसमें मैं ये, let's say मैं चाहता हूं कि give me a name for this. ये जब मैं निकालता हूं उसको मैं hertz कहता हूं. ठीक है? So let me write this there. ठीक है? I'm writing it. So I hope you understand this. So I'm now writing two things. 1 per second is called 1 hertz. So I'm now writing 1 cycle per second. ये क्या होगा? इसको मैं 1 हर्ट्ज नहीं कह सकता. ठीक है? तो मैं इसको क्या कहूंगा? इसका नाम मुझे बताएं. What is the best you can write here? You will either have to say cycles per second or you have to convert it to, and then you have to say what? You cannot say 1 cycle per second is 1 radian per second. So 1 cycle per second is not 1 hertz, it is 2 pi radians per second. Okay? And 2 pi radians per second is 2 pi radian per second. 2 pi radian per second is not 1 hertz. Hertz के लाने के लिए you need to make sure कि साइकिल आपके उससे निकल जाए, और निकल लेगा तब जब उसको आप डिवाइड करेंगे. ठीक है? तो रिमेंबर दिस डिवीजन बाय साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So अब आपको एक लास्ट इक्वेशन समझाता हूं. It will close this whole thread. Can you now combine these two equations to have a connection between f and omega? क्या फर्क है ओमेगा? देखो ना, ओमेगा आता है फेस पर टाइम से, एफ आता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम से. तो फेज और नंबर ऑफ साइकिल्स में क्या कनेक्शन था? यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट वन बाय 2 पाई. तो यहां पे भी आप वही करेंगे. अब आपको समझ आया कि ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई आपको स्मॉल एफ क्यों देता है? क्योंकि दोनों में फर्क है. ओमेगा में आप साइकिल रिटेन रखना चाहते हैं, यहां में साइकिल पे आप डिवाइड करना चाहते हैं. सो एक्चुअली ओमेगा बाय 2 पाई इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ओमेगा बाय, बताएं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, क्योंकि ये तो रट्टा मारा हुआ है ना, ओमेगा बाय 2 पाई. अगर यहां पे ओमेगा बाय 2 पाई की जगह मैं लिख दूं ओमेगा बाय, so then you actually understand it as well. So f equals omega by cycle, क्योंकि वो साइकिल आपको वैल्यू में नहीं चाहिए. ठीक है?
So now we move on to simple harmonic motion. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे बताएं, इसमें इसको हार्मोनिक क्यों कहते हैं? Why do we call it harmonic? Remember, harmonic is the name you use for periodic phenomena, and simple because अब पीरियोडिक में तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं ना, और इस आप देखो ना, आपने अभी जो कैलकुलस में साइन कोसाइन पढ़े हैं, आपने नोट किया होगा कि वहां पे साइन में साइन का स्क्वायर भी होता है, साइन का डबल भी होता है. तो सिंपल हार्मोनिक के लिए सिर्फ साइन और कोसाइन. ठीक है, अब ये तो मैंने जिस तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये एंगल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे सिर्फ वो जो 3 वर्ड्स थे ना, रियल वर्ड, कंसेप्चुअल वर्ड एंड मैथमेटिकल वर्ड, बिकॉज वी मोटिवेटेड एवरीथिंग फ्रॉम साइन एंड कोसाइन, दिस इज अ मैथमेटिकल वर्ड. तो हमें अभी कंसेप्चुअल वर्ड में भी जाना पड़ेगा. तो ये मोशन आपको कैसे मिलेगा? तो कैन यू गेट दिस मोशन जस्ट फ्रॉम वन पार्टिकल? Is it possible to have one particle? नहीं, मैं बताया तो था कि you have a particle, it is moving back and forth around an equilibrium, so why not? Why can't I have this motion from just one particle? क्योंकि पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज है, आपने जो चैप्टर अभी तक पढ़े हैं, उसका इनर्शिया होता है. ठीक है, so it will try to move in a straight line without change in velocity. So what do you need to bring it back? You need a new type of object, and that is the spring. So अब आपको पता है, अभी तक हम सिर्फ पार्टिकल मॉडल को डिस्कस कर रहे थे. So particle model is applied to rigid bodies because we are only interested in motion along a straight line or motion along a circle or along some path. If you want this motion, if you want it with that particle, then you need an external force. अगर external force है तो फिर आप कर सकते हैं. ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है ना कि let's say you are a football player. So a football player can actually make a ball move back and forth. He has to actually constantly interact with it. Yeah, like this. But is it possible for the footballer to kick the ball and then expect the ball to have this back and forth motion? Is it possible? No. So when will it be possible? When this object has its own capacity to return to its original state without needing any external force. और वो कैपेसिटी इस दरवाजे में है. देखिए, इस दरवाजे को मैंने ऐसे खोल दिया ना, अब मैं हाथ हटा भी दूं वापस चला जाएगा वो. और अगर वो ना हो ना उधर, हो सकता है ये बैक एंड फोर्थ मोशन करे. It means that there is a spring there. So you need a springiness in the physical world if you want objects to retain their original position. So अब आपको समझ आएगी कि जो bonds, जो atomic bonds थे, उसको हम springy bonds क्यों कहते हैं. You try to compress an object, right? Let's say I'm trying to compress this object. What is stopping me from doing so? Why can't my hand go into this board? There are bonds which behave like springs. Yeah, so I push them and then they retain their original position. समझ आ गई? So now I still want the simplest possible model, but this time I will not only need a particle because I need something to move, but I need a spring so that the particle is brought back to the equilibrium position. So spring mass. Yeah, spring mass. Nothing else. इसमें कोई friction नहीं है. So remember, air drag इसलिए क्यों लिखा हुआ है? You don't want friction here. Why? अगर यहाँ पे friction हो या air drag हो तो क्या हो जाएगा? What will happen to this plot? ये जो अभी हमने किया हुआ है. Try to understand this. Yeah. Let's say I disturb this from the equilibrium position and then I leave it. Because the spring has a restoring force, it will come back. When it comes back to the equilibrium position, what form of energy was it when you displaced it? आपको याद होगा इससे पिछले चैप्टर में, जो चैप्टर 9, 10, 11 में हमने एक चीज सीखी थी कि there is kinetic energy and there is potential energy.
काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की होती है? पार्टिकल की, बिकॉज अ पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी, या सो यू हैव हाफ mv स्क्वायर्ड. पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना जरूरी है? यू कैनॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल. हाइट तो इसलिए थी कि वी वर इंटरेस्टेड इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहां तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना. You need, remember, potential energy was energy stored in position. Now position, अगर आप position से सिर्फ position of the particle कह रहे हैं, वो enough नहीं है. क्योंकि अगर वो spring हटा दूं तो फिर भी इसका position होगा, लेकिन उसकी potential energy नहीं होगी. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि potential energy के लिए you need the object and the earth together as one system, right? You are separating two objects from each other, or you are separating two protons from each other, or two electron and proton from each other. So when you are changing the distances between objects, and if those objects can interact, there will be internal forces, and that is what you mean by potential energy. So यहाँ पे मुझे बताओ potential energy कहाँ पे store होगी? स्प्रिंग में स्टोर होगी, क्योंकि मास में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी जगह पे वापस जाए. स्प्रिंग उसको उधर ले आता है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? स्प्रिंग की है. और काइनेटिक एनर्जी किसकी है? मास की है. और जो सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग और मास दोनों है, उस सिस्टम की दोनों एनर्जी है. स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग भी उसका पार्ट है और पार्टिकल भी उसका पार्ट है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इस सिस्टम के हैं. ठीक है. सो नाउ व्हेन आई डिस्प्लेस दिस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन to a point, which energy am I giving to this system? Remember this particle was here in the equilibrium position, right? And somebody came and he or she displaced it to a point and then he left it. ठीक है. तो क्या उसने क्या दे दिया इस सिस्टम को? उसने स्प्रिंग को बेसिकली क्या किया? डिफॉर्म किया है, स्ट्रेच किया है. और स्प्रिंग की क्या क्वालिटी है कि वो वापस आना चाहता है. सो इट मीन्स दैट द एक्सटर्नल एजेंट हैज गिवन पोटेंशियल एनर्जी टू दिस सिस्टम. elastic potential energy, right? Elastic potential energy. So, and what is the kinetic energy when you are leaving it? इधर देखिए ना, मैं इसको इधर यहां तक ले आता हूं और इधर मैं अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, तो इस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है. तो इसमें कौन सी एनर्जी अभी है? वो पोटेंशियल एनर्जी दरवाजे में नहीं है, स्प्रिंग में है. स्प्रिंग निकाल दो, दरवाजा कभी नहीं जाएगा वापस. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, एंड द मोमेंट आई लीव इट, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू. और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? दरवाजा चाहिए. तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए? तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक को भी निकालो ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मिल सकती आपको. जिस तरह स्प्रिंग चाहिए उसी तरह, क्योंकि मास के बगैर काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी. स्प्रिंग की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. अ स्प्रिंग कैन ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब आपके जहन में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्प्रिंग अभी मूव कर रहा है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी भी 0 है इस दौरान जब मैं इसको मूव कर रहा हूं? नहीं, क्योंकि ये स्प्रिंग आइडियल नहीं है, ये आइडियल स्प्रिंग है. रिमेंबर, वी आर डीलिंग विद मॉडल्स. जिस तरह इसको मैं पार्टिकल जब कहता हूं ना, सो आई एम ओनली कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर, आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स. सो व्हेन आई एम मॉडलिंग समथिंग विद अ स्प्रिंग, I am looking for the ideal spring, which means that is the only property my model will have. This is a real spring. So real spring will have a mass. देखो ना, इसमें mass आपको नजर आ रहा है. ठीक है. तो real objects में अगर मैं actual block को यहां पे ले लूं ना, let's say मैं इस marker को लेता हूं, तो this marker will have some springiness. क्यों? This marker is not a rigid body. Why? Can you show me one experiment which proves that this marker has some springiness in it? मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, फिर आपने मुझे बताना है कि why is that enough to demonstrate that this marker is not a rigid body?
ये वापस क्यों आ गया? चैप्टर 9, 10, 11 में हमने पढ़ा था. Remember, when it was interacting with the wall, both the wall and the marker has those atoms with springy bonds. That is the reason they didn't actually got into each other. If I remove those springy bonds, this marker will go into the wall. Okay? So the reason it got back was both the wall and the marker has the. So it means that when you try to deform this marker, normally we model this as a particle. Fine. So we will model this box as a particle. But if you want to break the particle, or if you want to break the box, it will resist it, and it resists it because of its springy nature. So it means that there is no ideal particle in the real world, and there is no ideal spring in the real world. These are our models. So when we want to study only the rigid body motion, we model that object as a particle, knowing that it has other properties as well, just like springiness, right? But when we want to understand the springy nature of something, we model that same object as a. So देखो ना, इस experiment में I am modeling this marker as a spring mass system, right? But normally I can model this as a particle only. ठीक? So अब देखें कि यहाँ पे इसकी potential energy आपने दे दी, kinetic energy उसकी 0 है, ठीक है? जब उसको आप छोड़ेंगे तो that kinetic energy will be converted to the, that potential energy, elastic potential energy will be converted to the kinetic energy, और यहां तक आ जाएगा तो कौन सी एनर्जी 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से थी? क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम से उसको अलग किया था. जब वो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा तो स्प्रिंग विल लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, क्योंकि वो आप उसको वापस अपनी जगह पे ले आए. अब सारी इलास्टिक एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक में है. अब इस मास की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वहां रुक नहीं सकता? Inertia. So it will continue. Even though the potential energy is 0, it will still continue क्योंकि इसकी kinetic energy है जो कि इसको आगे लेके जाएगी. अच्छा, but in so doing it will lose again its own kinetic energy, but that energy is not going anywhere. That is again stored in the spring. ठीक है ना? So that is why it is called simple harmonic, because this motion, if the friction is 0, if air resistance is 0, this will never come to a stop. It will keep oscillating for the rest of its life. And that is why the graph is periodic on both sides. ठीक है? अब आप इसको आ जाएं. A particular kind of oscillatory motion is simple harmonic motion. In the figure, an air track. अच्छा, you need to understand why we need air track glider here. अच्छा, let's complicate this situation. Let's say यहाँ पे मैं थोड़ा सा air resistance या drag या कोई lubrication यहाँ पे लगा के, and let's say there is some resistive force, तो फिर ये ग्राफ कैसे होगा? You will again start with that initial potential energy. It will try to convert to kinetic energy, but in so doing you have, because you have resistive forces, so some of that kinetic energy will be lost to thermal energy, because friction has those microscopic, anything which is microscopic will go into thermal energy. और thermal energy का मसला क्या है कि spring की energy तो आप वापस मिल जाती है, kinetic energy भी आपको वापस मिल जाती है, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है वापस आप वहां पे हीट इंजन नहीं इंस्टॉल कर सकते कि मैं वहां पे पावर प्लांट लगा देता हूं. सो द प्रॉब्लम विद थर्मल नॉइज एंड फ्रिक्शन एंड रेजिस्टिव फोर्सेस इज दैट द एनर्जी इज स्टिल इन दिस यूनिवर्स, बट दैट एनर्जी कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू यूजफुलनेस. समझ आ गई? सो दैट इज व्हाई वी लाइक हाई क्वालिटी एनर्जी. व्हेन वी से सेव एनर्जी, वी डोंट मीन सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो कहीं नहीं जा रही ना. एनर्जी इस यूनिवर्स में है तो उसको सेव करने की क्या जरूरत है? व्हाट वी मीन इज दैट सेव हाई क्वालिटी एनर्जी. सो when I say save water is a high quality energy, because water can be converted to other forms, but if you waste that water, it is converted to a form which cannot be converted easily. So what you mean is actually save
क्वालिटी ऑफ एनर्जी, नॉट जस्ट एनर्जी, ठीक है। तो अगर यहां पे फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स या एयर ड्रैग होता तो फिर क्या होता, इट विल स्टिल स्टार्ट लाइक दैट, लेट्स से इसकी कोई एक इनिशियल पोजीशन है, बट it will reduce the amplitude. Why? Because that thermal energy is going out of the system. ठीक है? So the object's maximum displacement from equilibrium is called the amplitude of the motion. ये ज़हन में रहे, क्योंकि it will come back to that. Yeah? So maximum displacement को हम क्या कहेंगे? Amplitude, and the symbol will be A. And remember, you see, so A, negative A. अच्छा, इस A को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इस नेगेटिव A को हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो, इसको आप क्या नाम देंगे? यू नीड टू गिव मी अ नेम। सो दिस पॉइंट हैज टू नेम्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर जीरो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम को। सो वी कॉल दिस एम्पलीट्यूड बिकॉज इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू A से ज्यादा, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। Why not zero? Why don't we use zero for the minimum displacement? Because displacement here is not a magnitude, it is a scalar, and scalar can be positive and it can be, so the smallest value as far as the real numbers are concerned is negative A. Zero is not the smallest value. This is the smallest value, this is the largest value, and this is the value in between. So इसके लिए हम दो नाम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो एम्पलीट्यूड। इसके लिए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, बट वी कैनॉट कॉल इट एम्पलीट्यूड, राइट? बिकॉज एम्पलीट्यूड कैन ओनली हैव वन मीनिंग। वहां पे मैं कह रहा हूं ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैं उस दोनों को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता ना। तो जब आप इनमें से एक को एम्पलीट्यूड कह देते हैं तो आप दूसरे को फिर एम्पलीट्यूड, यू कैन नॉट हैव टू वैल्यूज फॉर द सेम थिंग, या। सो जिस तरह मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एम्पलीट्यूड इज आल्सो पॉजिटिव। और ये अब बताएं, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें कौन सा है? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। Is this simple harmonic motion? No. तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? What is the best you can say about it? It is periodic motion, right? It is also? This is also? Is this periodic? बताएं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैथ में पीरियोडिक हम इसको कहते हैं जब वो रिपीट होता है, ठीक है? तो ये तीनों पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेशन हम किसको कहते हैं? ऑसिलेशन के लिए सिर्फ पीरियोडिक होना इनफ नहीं है, इट हैज नो, स्मूथ भी नहीं, स्मूथ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ना। ऑसिलेशन के लिए जरूरी है कि वो पीरियोडिक मोशन, इट मस्ट बी अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इधर तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको नजर आ रहा है कि कौन सा है? ये 0 पॉइंट है ना, देखो ना, ये एक साइड पे मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम, राइट? ये इधर क्या है? ये इसके अराउंड है, और उसको आप इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। इक्विलिब्रियम यहां पे होता है, ठीक है ना? सो इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी, राइट? So now we need to mathematically write the expression for such a plot. अब इसमें देखो ना, यहाँ पे इसको हम A कहेंगे, and A will have to be positive by definition, amplitude, maximum displacement. This is minimum displacement, इसलिए हम उसको negative A कहते हैं. And let's assume that at time 0 it starts with the maximum value. It starts with the, तो maximum value का मतलब यह है कि all the energy is potential. All the energy is potential. ठीक है? So now you have this graph,
and t is the symbol used for the time period. 2t is the second. So how can I actually write the expression for this? So can you now tell me why is it a times cosine omega t? We need to explain this thing. So why not cos omega t? Sorry, why not cos t only? और दूसरी बात यह है कि cos के साथ वो जो मैं एक्स ट्रायंगल लगाता हूं ना, cos थीटा प्लस समथिंग, वो प्लस समथिंग इसमें क्यों नहीं है? उसका आंसर इसमें है. इसकी वैल्यू 0 पे क्या है? a है. तो यू हैव टू जस्ट प्लग इट देयर. ओमेगा टाइम्स 0, सो कोसाइन ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 0 इज 1, a times 1 is a. If this was cos omega t plus something, that something would not give you this value. समझ आ गए? Is that clear now? So it has to be cosine omega t plus 0. It cannot be cos omega t plus any other value, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी इस वैल्यू इसके साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो फिर a आपको नहीं दे सकता. तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन क्यों नहीं है, तो फिर आपको क्या आंसर होगा? साइन में तो फिर मुझे यहां पे 0 मिलना चाहिए ना, ठीक है. चल, सो a cos omega t is equal to x of t, राइट. ये इसकी क्या है? You differentiate this and you get the velocity, right? Cosine omega t का जो डेरिवेटिव है वो sin omega t है और omega t चेन रूल लगा के आप. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये तो मैथमेटिकल ग्राफ है. Can you tell me why is it starting from 0 and why is it moving this way, not this way, without using the math? Just use your concept of simple harmonic motion. Start from here. So I'm helping you. Because why is it here? Because you had a mass attached to a spring, somebody displaced it to a point and then released it. So at the point of release, it had maximum displacement. So that's why the position is here. So all the energy is elastic. What will happen after that when you move on? It will try to come back. So remember, because it is coming back to the equilibrium, what can you say about velocity coming back to the equilibrium? Remember, coordinate system आप क्या करते हैं? 0, x आपका to इसको आप पॉजिटिव x कहेंगे, इसको आप नेगेटिव x कहेंगे, because it is coming back to the origin, to the equilibrium. So इसलिए उसकी velocity क्या है? नेगेटिव. You can say that even without the math. ठीक है. And why is it 0? ये तो हम समझ आ गए कि नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है, बट 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? Why not from some non-zero value? नहीं, but that is the position. This is not position. This is velocity. You can have velocity even at the equilibrium position, because all the energy is elastic. So it means that the kinetic energy is 0. And when kinetic energy is 0, velocity has to be 0. So you need to explain this without the math, ठीक है? And जिस तरह इसका एम्पलीट्यूड है ना इस ग्राफ का, तो इस तरह इस ग्राफ का भी एम्पलीट्यूड है और उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी. अच्छा, इसको मैं मैक्सिमम स्पीड भी कह सकता हूं, इस पॉइंट को, और मैं इसको मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकता हूं. इसको मैं मिनिमम वेलोसिटी तो कह सकता हूं, लेकिन मैं इसको मिनिमम स्पीड नहीं कह सकता. क्यों? लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, राइट. इसको मैं मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकता हूं और मैक्सिमम स्पीड भी कह सकता हूं. इसको मैं मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी तो कह सकता हूं, मैं इसको मिनिमम स्पीड नहीं कह सकता. क्यों? क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड है ना. यहां पे वेलोसिटी स्केलर है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू आई जे के. वेलोसिटी स्केलर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जब वो नेगेटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, जब वो जो पॉजिटिव होता है. लेकिन स्पीड चूंकि मैग्नीट्यूड को कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम, इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं इसको एम्पलीट्यूड, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है. व्हाई विल दैट बी रॉन्ग? कैन आई से दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज minimum amplitude? Why will that be wrong?
क्योंकि एम्पलीट्यूड उस लार्जेस्ट वैल्यू की कहते हैं, वो तो उधर मिल गई है ना, यहां पे तो उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ऑन दी वाई एक्सिस यू हैव वेलोसिटी, सो वेलोसिटी की ये मैक्सिमम वैल्यू है और उस वेलोसिटी की ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन उस मैक्सिमम वैल्यू को आप मैक्सिमम स्पीड भी कहते हैं, तो उसके साथ माइनस साइन लगाने से वो मिनिमम स्पीड नहीं बनेगा, क्योंकि दैट कैनॉट बी नेगेटिव, सही है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय डेफिनेशन, सो स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड, सो इट कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। There is no such thing as negative speed. There is no such thing as negative amplitude. But pay attention to something. When you are differentiating this, तो A तो अपनी जगह पे आ गया. You will have negative, right? And this omega will also be part of it. So इस V max की वैल्यू क्या हो जाएगी? Omega times A, right? Omega times A. So V max is A क्योंकि वो पहले से था, and omega is a consequence of differentiation. और differentiation में तो negative sign भी है, वो क्यों नहीं आया इसमें? Why don't I say omega V max is minus omega A? देखो ना, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाता है? माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी. तो why don't I say minus omega A is V max? Do you want me to show the working? किधर है वो? I am showing the working here, ठीक है? So I start with x equals A cosine omega t, right? Can someone tell me that if I remove this bracket, is this okay? I'll give you a hint. If I write it this way, then it's wrong. Then it's wrong. But this is correct. Why? ये डॉट का मतलब ये है कि I am making the multiplication explicit, right? And function application has a higher precedence than multiplication. तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, ये पहले क्या होगा, ये पहले cos ओमेगा पे अप्लाई होगा और उसके बाद आप उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो इम्प्लिसिट है, इसको कहते हैं juxtaposition. When I say a times b, so a times b is different from a dot b, although they will evaluate to the same thing, but the rules of precedence are different. यहां पे आप रूल को फॉलो करेंगे, यहां पे फॉलो नहीं करेंगे. सो ए बी विल ऑलवेज बी इवेल्युएटेड बिफोर एनीथिंग एल्स. तो ये कोसाइन से पहले ओमेगा टी होगा. तो यहां पे आप ब्रैकेट, यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो नाउ डिफरेंशिएट दिस. सो डी एक्स, और उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस. और इधर क्या हो जाएगा, माइनस. सो व्हाई डोंट आई यूज दिस माइनस ओमेगा ए एज माई वैल्यू फॉर वी मैक्स? व्हाई? So I'm only doing the math, but you are going to tell me what do I mean by V max. V के साथ यहां मैंने x क्यों लगाया है? क्योंकि I don't mean the speed, I don't mean the magnitude, I mean velocity as a scalar. So V along x, ताकि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क पता चल जाए. कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा. तो अगर मैं इसके साथ x नहीं लगाऊंगा, अगर मैं सिर्फ V लगाऊंगा, तो वो तो स्पीड हो जाएगा. एंड स्पीड कैन ओनली बी नॉन नेगेटिव. समझ आ गई?
अब वो x मैंने इसके साथ लगा दिया है, इसके साथ तो मैंने कोई x नहीं लगाया, इसके साथ मैंने सिर्फ मैक्स लगाया है, तो ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती तो इसको मैं मैक्सिमम स्पीड कहूं या मैक्सिमम वेलोसिटी कहूं, माइनस फिर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ओमेगा हैज टू बी पॉजिटिव, a has to be positive, omega times a is positive, and you cannot have a negative value for the magnitude, and you cannot have a negative value for the maximum velocity either. So ये आपको निकालना पड़ेगा, there is no other way. ठीक है? So आपको इक्वेशन मिल गया कि maximum speed और maximum velocity equals omega times a. और ये इस ग्राफ में ये किस पोजीशन पे आपको मिल रहा है? when x is 0. So x is a cos omega t और ये वही। अच्छा, और इसको आप because we also know omega is equal to 2 pi by capital T, तो ये टाइम पीरियड के साथ उसका कनेक्शन है और ये फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कनेक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये इसने क्या किया हुआ है? अच्छा, ये वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने किया। ठीक है, डिफरेंशिएट। ठीक है, v maximum is omega times a. Okay, we need to be very careful with this example. This is a trivial example, but there are many mistakes you can make while solving such examples. So let's try to convert this to mathematical symbols one by one. Okay? And you are going to tell me the right symbol, right? So let's start with the first thing. An air track glider. So यहां तक मुझे क्या समझ आ रही है? एयर ट्रैक ग्लाइडर कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर ड्रैग नहीं है। सो इसका मतलब है कि यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के चांसेस हैं। ठीक है, इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। ग्लाइडर आपको पता है रिजिड बॉडी होती है, तो आपका पार्टिकल मॉडल होगा, और जो स्प्रिंग भी है, तो अब दोनों चूंकि आ गए तो इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पुल्ड 20 सेंटीमीटर, पुल्ड, ठीक है, 20 सेंटीमीटर टू दी राइट। अब यहां पे आपने क्या करना है कि राइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाऊंगा जिसमें 0 में कहूंगा इक्विलिब्रियम को। I have to make expression. So my 0 will be, and x will be the displacement of the glider or the particle to the right of the equilibrium. To the right of the equilibrium. मैं चाहूं तो मैं इसको भी x कह सकता हूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि इसने यहां पे पुल्ड टू दी राइट कहा है, उसने ये नहीं कहा कि ये राइट को आपने पॉजिटिव कहना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चूंकि ये नॉर्मली हम ये करते हैं, तो आई एम डूइंग इट ओनली आउट ऑफ हैबिट, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। समझ आ गए? अब बताएं कि इफ दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई डोंट नीड अ वाई एक्सिस हियर, राइट, एंड रिलीज एट टाइम 0 सेकेंड, तो यहां तक मैं क्या क्या लिख सकता हूं? बताएं मुझे, क्योंकि आगे जाने से पहले फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। तो क्या क्या मैं लिख सकता हूं? आपको पता है जिस तरह मोशन डायग्राम में हम फ्रेम नंबर्स होते थे और फिर पॉइंट्स भी होते थे, 0.0, 0.1, 0.2। सो आई कैन यूज द लेबल 0 फॉर द इनिशियल टाइम, राइट। तो लेट्स से उसके लिए मैं 0 कह देता हूं, तो आई कैन सेफली से कि इनिशियली ये किससे है? ये पुल टू द राइट। पुल टू द राइट का मतलब है कि यू हैव पुल्ड इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये अंडरस्टूड है। तो इसकी वो जो लेबल 0 है ना, वो मैं किसके साथ लगाऊंगा? x0। रिमेंबर दिस x is the coordinate, it's for all the values, but this is the initial position. What is the initial position? बताएं। Is the initial position 0 or is the initial position 20 सेंटीमीटर? नहीं, आपके यहां पे दो आर्गुमेंट हो सकते हैं ना। आप ये आपको फ्रॉग वाला एग्जांपल याद है एक चैप्टर में? वो फ्रॉग पहले उसने स्ट्रेच किया था, फिर उसने जंप किया था, तो वो स्ट्रेच वाला एक स्टेज था, उसके लिए अलग मॉडल चाहिए था, फिर वो। तो अब यहां पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे आगे।
सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट होता है? जब आप उसको रिलीज करते हैं। रिलीज से पहले वाली स्टोरी आपके पिछले चैप्टर्स में होगी, वो ऑसिलेशन नहीं कहलाएगी। ऑसिलेशन तब शुरू होगी जब आप उसको, तो रिलीज पे हमने x0 को क्या लेना है? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ ही गॉट दैट ग्लाइडर टू दैट पॉइंट, दैट इज अ डिस्कशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। वो ऑसिलेशन नहीं है, वो तो आपके न्यूटन्स लॉ है, F = ma, कितने टाइम में उसने किया, दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न। बात समझ आ गई? तो x0 इज 10 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है? टाइम जीरो। व्हाट इज टाइम जीरो? आप इसको जीरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनिशियल है ना, 0 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 सेकंड में उसने किया है, उसने जितने सेकंड में भी किया वो मेरा कंसर्न ही नहीं है। टाइम जीरो का मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां से स्टार्ट होगी। I don't care how he got it. I don't care whether he did that in 1 year or 1 millennium or 1 microsecond. That is none of my business. समझ आ गई? हाँ? x0 20 है? और सॉरी, ये 10 मैंने क्यों लिखा? अच्छा हाँ, वो नीचे वो मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। उस 10 सेकंड का यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ गई? और क्या क्या मैं लिख सकता हूं बताएं? There is more I can write. अभी उस पिछले इक्वेशन में मैंने क्या देखा था? मैंने x की इक्वेशन देखी थी और मैंने vx की भी देखी थी। व्हाट इज vx? vx0 का मतलब यह है द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। वो क्या है? जीरो, क्योंकि यू आर ओनली रिलीजिंग इट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, यू ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी। सो vx0 इज 0 मीटर पर सेकंड, या मैं सेंटीमीटर पर सेकंड लिखूं या मीटर पर सेकंड, मेरी मर्जी है। लेट्स राइट सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वो भी मीटर पर सेकंड, वो मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे और क्या मैं लिख सकता हूं? कैन आई राइट ए हियर? एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए नहीं कहते, तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू, इन दिस केस normally a will not be x0 in every case, but in this case a is equal to 20 centimeter. This is all I can write. ठीक है। नाउ उसने क्या पूछा है मुझसे? ये जो जीरो है ना, अब यहां पे चेक करें, t is equal to 0 के मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? t0, क्योंकि मुझे अगले पॉइंट्स भी चाहिए। नाउ इट मेक्स 15 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड्स। अब यहां पे क्या क्या लिख सकता हूं मैं? 15 ऑसिलेशंस, तो ये 15 मैं कैसे रजिस्टर करूंगा? 15 इक्वल्स व्हाट? n। लेकिन यहां पे मैं एक और काम भी कर सकता हूं। कैन आई से समथिंग अबाउट n0? n क्या था? नंबर ऑफ साइकिल्स। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ साइकिल्स? 0। ये n क्या होगा? अब आपको समझ आई? सिर्फ n लिखने से मसला हल नहीं होगा, आपको बताना है कि n0 है या n1 है या n2 है। सो अटैच लेबल 2 टू दिस। व्हाई नॉट लेबल 1? क्योंकि आगे वो क्वेश्चन में 0.800 का भी पूछेगा, तो मैं इसको लेबल 0 क्या अटैच करूंगा, इसके साथ मैं लेबल 1 अटैच करूंगा, और इसके साथ मैं लेबल 2 अटैच करूंगा। सो दैट 15 इज द वैल्यू ऑफ n2, बिकॉज आई एम अटैचिंग लेबल 2। तो अब बताएं ये 10 किसकी वैल्यू है? 10 सेकेंड्स, ये बताएं आप। t2। So labels की आप इंपॉर्टेंस है। The labels actually they put you on track. ठीक है। अच्छा, now let's get to the first। तो ये आपके पास गिवन हो गए ना। What is the period of oscillation? So find में मैं क्या लिखूंगा? find में ये तो सारा हो गया गिवन, ठीक है।
गिवन। अब फाइंड में बताओ, फाइंड में क्या क्या मुझे चाहिए। पार्ट ए में क्या चाहिए मुझे? तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए मेरा सिंबल क्या है? टी। नेट कवर टी। ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम स्पीड? वी मैक्स। आई डोंट नीड टू राइट एक्स फॉर दैट क्योंकि स्पीड इज मैग्नीट्यूड। और सी में क्या है? पार्ट सी में आई नीड यू टू गिव मी अ सिंबल फॉर दिस क्वांटिटी, और आपको लेबल्स की समझ आ जाएगी। व्हाट इज द पोजीशन एंड वेलोसिटी? तो पोजीशन के लिए कौन सा सिंबल होता है? एक्स। और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? वी नहीं होता। वी तो स्पीड के लिए होगा ना। तो इज दिस इनफ? नो, क्योंकि एक्स तो पूरे कोऑर्डिनेट के लिए है, वी एक्स पूरे कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी के लिए। तो यहां पे क्या है? आई हैव अटैच्ड लेबल 1 टू दैट, सो आई मीन x1 एंड वी एक्स 1। और इसका मतलब ये है कि वो गिवन में ये भी आ जाएगा। वो गिवन में एक चीज मिसिंग है, ये 0 पॉइंट क्या है? अब मैं बताता हूं, मैंने इसको लेवल 1 कह दिया ना, तो ये 0.800 सेकंड किसकी वैल्यू हो गई? अब बताएं। ये t1 हो गया। तो अगर मैं इसको n1 कहूंगा तो 15 ऑसिलेशन 10 सेकंड में हुए हैं, 0.800 सेकंड में नहीं हुए। समझ आ गया? अब क्लियर हो गया? सो आई हैव एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू द डायग्राम। तो ये मुझे अब बताएं, इससे मैं स्टार्टिंग विद दिस, हाउ डू आई गो विथ टी? ठीक है, कोई फॉर्मूला ढूंढ ले। टी किस किस फॉर्मूले में आ रहा है? टी का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट? एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसका मतलब कि पहले हमें एफ चाहिए, और एफ का ताल्लुक किससे है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा? एफ इक्वल्स डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। तो अब n0 पे मुझे ये वैल्यू नहीं मिल रही, n1 पे नहीं मिल रही, मुझे n2 पे मिल रही है। तो दैट इज चेंज, सो n2 माइनस n0। n1 पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, मेरे पास या n0 है या n2 है। आई हैव नथिंग अबाउट n1। मुझे यहां नहीं पता कि t 0.800 पे वो क्या कर रहा है, उसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं। आई हैव नो आइडिया, बट आई डू नो दैट n0 इज 0 एंड n2 इज 15। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द स्ट्रेटेजी विच यू नीड टू बी एक्चुअली यूजिंग। आप ये नहीं है कि बस आपको फॉर्मूले आ गए तो जो है ना वो शुरू हो जाए। इट हैज टू बी केयरफुली डन। n1 इज एक्चुअली नॉट अवेलेबल टू मी। सो आप बताएं f की वैल्यू क्या हो जाएगी? t2 माइनस t0, मुझे दोनों वैल्यूज पता है ना। 10 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? 10.0 सेकेंड्स। और n2 माइनस n0 क्या है? 15 only, not 15 oscillations, because when you say 15 oscillations that will mean 15 cycle, and that cycle will mean that it will have a 2 pi with it. That's not what you want. ठीक है? It's very important. अब बताएं क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? 1.5 हर्ट्ज। अब बताएं टी क्या है? 1/f। कैलकुलेट कर दो इसको। ठीक है? वी मैक्स क्या है? Remember, I just derived it a while ago. But omega was 2 pi by t, right? So you have everything. You have 2 pi, you have a, you have t. ये भी आ गया. What is x1? x1 और vx को कैसे कंप्यूट करेंगे? उसके लिए हमें वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x और ओमेगा t के. वो इक्वेशन क्या है? राइट दिस देयर. x equals a cos omega t, and omega I know is, I can write omega, instead of omega t I can say 2 pi t divided by
capital T, right? Because I know it will be omega t and omega is 2 pi divided by t, और t की वैल्यू आप यहां पे लगा देंगे इधर से, ठीक है? अब बताएं यहां पे क्या होगा? कैन, बाय द वे, कैन यू टेल मी द वैल्यूज? ए की वैल्यू क्या है यहां पे? 10 सेंटीमीटर, राइट? नो, 20.0 सेंटीमीटर in the bracket and then cosine 2 pi t और 1.5 का 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? 0.67. स्मॉल टी तो x और t तो कोऑर्डिनेट्स है ना, स्मॉल t की वैल्यू ना लिखें इधर। 0.67 के साथ क्या आएगा? सेकंड है। आपने वो सेकंड लिखना है, क्यों? क्योंकि टाइम की वैल्यू है, टाइम पीरियड की। अगर आप यहां पे सेकंड नहीं लिखेंगे तो इस टी का तो यूनिट होगा, तो उसका क्या करेंगे फिर आप? यू वांट टू मेक श्योर कि वो टी का यूनिट इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाए। अब आप बताएं कि इस इक्वेशन से मैं कैसे हेल्प ले सकता हूं यहां पे? आई नीड x1, राइट? तो क्या हो जाएगा? अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं यहां पे t की वैल्यू क्यों नहीं लिखना चाहता। t की वैल्यू मैं अब लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा? x1 विल इक्वल 20 सेंटीमीटर्स कोसाइन, बताएं, 2 पाई, और अब मैं यहां पे t1 लिखूंगा। t1 आपको पता है? हाँ, वो आप खुद लिख दे, मैं सिर्फ t1 लिखना चाहता था, आपको पता है स्ट्रेटेजी क्या है। और नीचे क्या है? और मैं यहां पे 0.67 की जगह कैपिटल टी लिख रहा हूं, सो दैट यू नो हाउ यू प्रोसीड। और आगे Vx है, Vx1, पहले आप Vx लिख देना, इसको डिफरेंशिएट करें और क्या लिखें? Vx यू नो इज ओमेगा माइनस ओमेगा ए साइन 2 पाई बाई टी, ठीक है? यू कैन इवन राइट ओमेगा, या ओमेगा आपको पता है ओमेगा ए क्या है। You can even say 2 pi, yeah, by t. और SVX में भी आप अभी x की जगह क्या लिखेंगे? Vx1, और Vx1 और फिर t1. So everything is actually now in your control, ठीक है ना? You just had to give the right labels. Sorry? या बिल्कुल, वो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, 1 और 1.5। अब आपने मुझे बताना है कि इस कैलकुलेशन में क्या उसने गड़बड़ की है। आंसर तो एंड पे आ गया ना मुझे, इसमें क्या गड़बड़ हुई है? ये ऑसिलेशन आप नहीं लिखना, ठीक है? क्योंकि ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नॉट व्हाट वी मीन बाय हर्ट्ज, ठीक है? और दूसरा, इसने कन्वर्ट किया है मीटर्स में। देयर इज नो नीड टू डू दैट अनलेस आई रिक्वायर। आप चाहें तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, मीटर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपसे डिमांड ना करे। यस, इक्विलिब्रियम से मोशन स्टार्ट नहीं हो सकता ना। इक्विलिब्रियम से आपने उसको डिस्प्लेस करना है किसी पोजीशन पे, फिर आपने उसको छोड़ना है, और उस दौरान सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। समझ आ गई? सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके बाद हम इसको कहते हैं। उस दौरान वो नॉर्मल आपका F = ma वाली स्टोरी है, ठीक है? तो जिस तरह आप पार्क में बच्चों को वो देते हैं ना, तो पहले आप उसको छोड़ते हैं, उसके बाद वो सिंपल हार्मोनिक शुरू होते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, बच्चा खुद जो है ना वो खुद भी नहीं कर सकता, तो वो इक्विलिब्रियम से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। यू नीड सम एक्सटर्नल एनर्जी टू ब्रिंग इट टू अ पोजीशन, ताकि उसको इनिशियल इलास्टिक एनर्जी मिल जाए, और उसके बाद वो, हाँ, अगर आप चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि उसमें वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा, उसके और तरीके हैं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट, ठीक है? आप ये कर सकते हैं कि लेट्स से आप जिस तरह बच्चे को आप स्विंग देते हैं ना, तो किसी जगह छोड़ के आप उसको छोड़े नहीं, आप उसको उस दौरान पुश भी कर दें, ठीक है? सो देन यू विल हैव एन एक्स्ट्रा मोमेंटम एज वेल, बट दैट विल कॉम्प्लिकेट द मॉडल, ठीक है ना? वो हम किसी टाइम पे वो भी कर लेंगे।
अच्छा, इसके बस सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि ये इसने कर दिया है। ये दूसरा प्रॉब्लम है, सी पार्ट है। ठीक है, नहीं उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी तो नहीं थी इसमें। हाँ, मैक्सिमम तो हमने कर दी थी ना, बिल्कुल हमने कर दी थी। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है अभी? हो गया है। अब ये एग्जाम्पल मेरे दिल को लगा था, तो ये क्या होगा इसका? अब होगा क्या इसका? पूरा दिन मेरा खराब जाएगा जब एग्जाम्पल नहीं होगा तो।